Today we are going to start our course on data structures and algorithm. In this lecture, we shall see the importance of data structures and why we are using algorithms. Okay. So initially, I'll give you a review, and then we will have some activities to understand it better. So a quick thing about me. So over here, I say I've done my PhD from France. I'm associate professor and lab director of high performance computing. Uh, I have joined NUST back in 2011, and I have honor to teach BSCS 1. Now you people are BSCS 12. Okay. And I love algorithms, right? Algorithms are the techniques, very precise, like mathematics, that computers can understand, and every new idea can be put into an algorithm. My current research is in the area of large language model for the forecasting of stock markets and for the forecasting of energy system. And moreover, it has applications in chat GPT and other chatbots as well. We are also developing a local LLM, which is called Bath GPT. It is fine-tuned LLM. And my YouTube personal link is also there if you want to find more. Email address, counseling hours, you can send me an email, and office is HPC Lab near Seek Seminar Hall. Okay, so first of all, very interesting. In the last session, we have talked about in the lab, because this is our first lecture, we have talked what are your hobbies, and some people said, well, I love to watch movies in my free time. Some said, I love to have music. Okay. Other people said, I want to sketch, like photos. Now, all this media, whatever is there on the computer, it is nothing but what? It is just bits and bytes. That's it. So if you are hearing the best melody, I mean, you are talking about Beethoven's Fifth Symphony, which is one of the best music. So what is that? It is nothing but 0 and 1, 0 and 1. Okay. If we are talking about movies, again, you have to follow a format. It would be MP4, and you will see it is again 0, 1. If we are talking about even at lower level, nowadays people, they are working in the area of genetic engineering, and what they are doing, they are trying to find out what is causing sugar diabetes in the coming generations. If your parents have diabetes, then there are better chances that you will also have diabetes. Okay. So what they do, they try to go for DNA, then they find what is the particular gene which is responsible for that. Then they find, okay, this is A, T, C, C, G, T, G, and so on. So that is the gene which is responsible for what? For diabetes disease, for particular disease. And if you want to remove that disease, you can go for genetic engineering, and inshallah, that disease won't be there in your offspring. Okay? So such type of things would be there. So with the help of genetic engineering, you can do a lot of things. And today in this lecture, I will say, don't focus on this thing that, well, because I got CS degree, I have to go in CS software house. No, you can go anywhere. You can go to a genetic engineering firm where you are modifying the DNAs or doing better things. You can go to making better than Google Maps. Because Google Maps sometimes they hallucinate, moving in circles. You can go for photo editing and other stuff. It is in 2 dimension. You can go to 3 dimension and even higher dimension. Okay. Music. One of my FIP group, they are going for the auto creation of music.
some type of music that you never heard before. Again, based on LLM and movies, you have seen that now people, they are earning billions of dollars from every movie, every successful movie. Okay? And that trend of Hollywood that is being shifted to each country now from USA to India. Why? Because Indians are better software developers than us. Okay, for now. Okay, when we go, you will see. Anyways, there is a lot of money in IT exports. If you work for high type of movies, in animations, etc., you can earn a lot of revenue for yourself, and then for your family, and for your country. And eventually, you are serving the humanity because you are creating one of the best source for entertainment. Okay. By the way, this lecture is being recorded, and I'll try to put it on my YouTube channel as well. So if you want to have revision. So now, what we do, we say that now all this data, that data of movies is there in different shades. The data of DNA, that is in different shades. Now, for every data, you have to do three things, basically. Okay, if we are talking about this G, A, C, etc. Okay. G, A, T, T, A, C, and so on. If you are talking about this one, then there are three operations that you have to do. Okay. So the first operation that you have to do is insertion operation. That is the first thing. And then second thing is deletion. And third thing is search. These are the fundamental basic operations. Then there are other operations on the top of that, that is on later on. But these are the operations which are there that you have to search. Now, Gattaca is something that is coming from DNA. Now, to store this thing, whether you have to use the same model which you are using for saving the movies, yes or no? Okay, make your viewpoint for yes or no. There is no option of being neutral. Okay. Okay, how many people think that pattern would be same either for saving movie or DNA? Raise your hand, pattern would be same. Okay. How many people say pattern would be different? Raise your hand. Okay, good. Yes, so the correct answer is that although you can use the same pattern, but that won't be efficient. Why? Because for movie, there is not, I mean, once insertion operation is there, then you have to go for search to play the movie. But for DNA, there are a lot of insertion and deletion operations as well, apart from search. So that depends on the requirement of data, what type of data you are using. So we will use different type of data structures. Okay, depending on the usage. So usage is talking about usage that is asking what type of data structure we have to use. Right? By the way, how many people know this photo before? Raise your hand if you know this photo before. Yes, can you tell the last one? What is that? The name of this photo or something? Anyone can
Tell the name of this photo. Huh? This is not AI generated. Okay, this is the famous photo taken by Steve McCurry, one of the best photographers of one girl. Okay? This was published in National Geographic during the Soviet war on Afghanistan. Anyways, so moreover, this one photo has changed the imagination of the West. West was thinking that Afghanistan is full of terrorists, but this photo told them no, there are kids who are just like Westerners, who are, I mean, she seems to be wanted in the war. Okay, now digital media must be arranged. Why? Because we want to research, we want to believe, and we want to search. And then it has to be accessed, find the data matching some conditions, insert new data, and remove the old data. That is what we really want. Okay. So diabetes का हमने पता चलाया था. This is the pattern in the gene which is related to diabetes. etc. So we have to find this pattern and we have to replace it. तो इस तरीके से replace करना है कि diabetes चला जाए उसकी जगह पे दिल का मर रहा है. Sorry, मैं कह रहा हूँ diabetes चला जाए उसकी जगह पे और कोई मर्ज ना आए. So that is my example. So now we have to process, then we have to use algorithms for the shortest path, for the minimum cut, and for fast Fourier transform. Now, whenever we are talking about data structure, okay, so data structure, if we are talking about, then the simplest data structure that we have studied before, that was array. Okay, and then we have used pointers in array. पॉइंटर्स आपने पढ़े हुए हैं, ठीक है. इसके बाद इससे हाई लेवल पे अगर आप चले जाएं, फिर आप कहते नहीं एरे वाला जो डेटा स्ट्रक्चर है, दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट टू डेटा स्ट्रक्चर्स. वन इज एरे एंड द अदर वन इज व्हिच वन? लिंक्ड लिस्ट. आप लोगों ने लिंक्ड लिस्ट पढ़ी? Oh, good. We will learn here. Okay, so what is the situation? We are talking about A and n is equal to 4. क्या होता है? ये आपकी बाइट्स आ जाती हैं. ये पहली 4 बाइट्स आपकी A0 के लिए हो गई. उसके बाद ये 4 बाइट्स आपकी A1 के लिए हो गई. उसके बाद फिर नेक्स्ट 4 बाइट के लिए हो गई, A2 के लिए हो गई. तो फिर नेक्स्ट 4 बाइट आपकी हो गई इसके लिए A, ठीक है. तो 4 बाइट्स फॉर एवरी इंटीजर, राइट. इंटीजर की क्या साइज होती है? 4 बाइट. गुड. ये हो गया. तो आपने शुरू में ये एलोकेट कर दिया और साथ में आपने ये आपने रेट डिक्लेयर कर दिया while be writing the pseudocode. ठीक है. Putting the punctuation marks, that is not our concern in the class. Okay. Now we have spared this particular thing on array. Now, beauty of array is that whatever is there in the array is easily accessible. But what is the problem? The problem is that okay, this is being used. Then there is another variable which is called b. When
they asked for the allocation. They said, well, जब यहाँ पे जगह पड़ी हुई है, यहाँ पे B को जगह दे देते हैं. उन्होंने 4 बाइट जो थी वो B को दे दी. ठीक है. अब क्या हुआ? अब बाद में इस तरह सिलसिला चलता रहा. उन्होंने कहा कि अब A को एक सेल ज्यादा चाहिए. एक में 5 इंटीजर स्टोर करने हैं. जब 5 इंटीजर स्टोर करने हैं तो फिर क्या हुआ? फिर जनाब अब क्या हो सकता है? यहाँ से तो सारी जो मेमोरी है वो एलोकेटेड है, उसके बाद आगे किसी और ने कब्जा किया हुआ है. तो आप क्या कर रहे हैं? अब इस जगह को यहाँ से उठाकर किसी और जगह चलेगा. ठीक है. तो ये पूरे का पूरा कॉपी होगा और पूरे का पूरा किसी और जगह पे ट्रांसफर होगा. यहाँ पे 5 सेल्स की जगह होगी. 5 सेल्स की जगह आपने बना ली. यू आर रनिंग प्रोग्राम, thousands of users who are sending queries, and all of the sudden आपको पता चला कि अब आपको 6 सेल्स की जरूरत है. अब आपने कहा यार अब मजीद एक सेल की जरूरत है, तो आप इसको जरूरत करते हैं. ठीक है. दैट इज because of this reason array is not the best one in this particular situation. फिर क्या हम करते हैं? use something which is called linked list. Linked list में क्या होता है? Linked list में we say that okay, welcome here, and we say that we are going to store something like store ints. What is that? One is 42, other one is 27, other one is 78, and the last one is 29. Okay, these are the 4 ints there. Now, what happened in linked list? In linked list, everything works in nodes. Okay. So how they work in nodes? Every node consists of 2 cells. In the one cell, they are having okay, so what happens? There are 2 cells. In the one cell, they are having this 46. Then other cell is what? 27. And then other cell is 40, 78. And then other cell is 29, the last. Okay. तो अब इसमें क्या करना है? बेसिकली दे आर नोड्स. हर नोड के अंदर 2 इंफॉर्मेशन है. इसका कोई ना कोई एड्रेस तो मौजूद होगा. ठीक है. जैसे ही आप ये वाला लगाते हैं एंड, अगर जिसका नाम वेरिएबल है, एंड वेरिएबल, व्हाट यू गेट द मेमोरी लोकेशन. जो मेमोरी लोकेशन आएगी से वो आपकी है FA396 whatever जो भी है. ठीक है. तो ये वाली जो है ये इधर कैलकुलेट होगी FA396. बेसिकली आपने इसका एड्रेस उसको दे दिया कि ये कहाँ पर लोकेशन करी है. व्हाट हैपेंस? दिस इज द एड्रेस, दिस इज लिंक्ड विद दिस वन. ठीक है. उसके बाद फिर आपने क्या किया? नेक्स्ट 78 की किसी जगह पे मौजूद है. 78 के लिए आपने क्या किया? यू फाइंड आउट कि ये कहाँ पे मौजूद है. इसकी जो लोकेशन है वो आपने यहाँ से फाइंड आउट की, तो वो आपने यहाँ पर ऐड कर दी GF9 बटन. तो आपने इसको इसके साथ लिंक कर दिया. ठीक है. सिमिलरली 29, इसकी आपने मेमोरी फाइंड की. ये जितनी भी बनती थी, यू हैव डिस्कवर्ड दैट ये जो मौजूद है
ये 6 9 F C एंड इसके मौजूद है, ये आपने इसको वहाँ से लिंक कर दिया, ठीक है। उसके बाद अब मजीद कोई वैल्यू नहीं है तो यू से नल कर दिया, NULL, so that is your linked list, ठीक है। बेसिकली लिंक लिस्ट क्या काम कर रही है, तो आपकी मेमोरी थोड़ी ज़्यादा ले रही है, लेकिन रन टाइम पे अगर इसको एक्सटेंड करना हो तो एक लिंक और डाल दें, फिर मजीद एक्सटेंड करना हो फिर एक लिंक और डाल दें। उसके लिए कंसेक्टिव लोकेशन होना जरूरी नहीं है, दैट इज द ब्यूटी ऑफ लिंक लिस्ट, ठीक है। अभी मैं आपसे एप्लीकेशन पूछूंगा अरे की और लिंक लिस्ट की एक एक एप्लीकेशन आपने खुद से लिखनी है। आई check that and I pronounce the best one which is regarding my lesson. Not the best one, but rather something okay. ये हो गई, ठीक है। उसके बाद अब एक और एलिमेंट आ जाता है which is say 71। तो 71 को अगर कहीं पे डालना है तो आपने क्या करना है, उसके लिए जगह यहाँ पे मिली है तो आपने को निकला नहीं है, 71 को यहाँ पे डाल दिया। इसकी जो मेमोरी लोकेशन है वो आपने फाइंड की, वो आपने मिली FCAB यहाँ पे नल को आपने FCAB कर दिया, FCAB और इसको आपने इसके साथ लिंक कर दिया और यहाँ पे मजीद आगे नहीं जा रहा तो दैट इज नल, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर जिनको कब्जा मिल गया आपने उनको अपनी जगह पे ही रखा एंड यू आर एक्सप्लेनिंग दैट। यस सर, या नोट्स क्या यहाँ पर नोट कैसे, ओके, व्हेन यू कंबाइन ये जो कपल आप बनाते हैं दैट इज कॉल्ड नोट, ओके। नोड इज दिस एंटायर थिंग इज नोड, एक नोड के अंदर दो एंट्रीज हैं, ठीक है। एक नोड के अंदर एक एंट्री जो है वो हमारे पास क्या है, वैल्यू है, और दूसरी एंट्री जो है नोड के अंदर ही, ठीक है, दैट इज द मेमोरी एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट वन। इसमें अगर टोटल देखें तो एक नोड, दो नोड, तीन नोड, चार नोड और 5 नोड्स हमारे पास मौजूद है, ठीक है। हर एंट्री के लिए हमें नई नोड चाहिए होती है। नोड के अंदर दो वैल्यूज होती हैं, पहली वैल्यू जो होती है वो उस वेरिएबल की वैल्यू होती है, और दूसरा जो होता है इससे कमिंग अप जिसके साथ आप लिंक कर रहे होते हैं उसका मेमोरी एड्रेस होता है, ठीक है। ओके, तो होपफुली आपको एरे का जिसके अंदर आप सबको एक ही लाइन में डाल देंगे, लेकिन फिर बाद में जैसे जैसे ऐड होते हैं आपको शिफ्टिंग करनी पड़ती है, लिंक लिस्ट में आपको कोई मसला नहीं होता, राइट। तो इसकी कोई रियल लाइफ एप्लीकेशन एरे की और लिंक लिस्ट की जितनी की कोशिश करें सोच कर करिए। आप अपनी एक नोटबुक और पेन ये काइंडली अपने पास रखा करें, because Confucius says that I hear, I forget, I see, I remember, I do, I understand. तो मेरी कोशिश होगी कि आप लोग I do and I understand वाली लेवल पे पहुंचे, आप खुद से करें, और आपको ज़्यादा से आप अपने दोस्तों के साथ डिस्कस भी कर सकते हैं जो लेफ्ट साइड पे बैठे या राइट साइड पे बैठे हैं।
Raise your hand if you have found the example. I'm pretty much sure एक ही example आपको काफी मिल गई होगी. Data लिंक लिस्ट की example आपको कोई सी सोचनी पड़ेगी. बढ़ता रहता है. जी, आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट जिसे बचपन से डॉक्टर बनने का शौक है? I mean, एक छोटी सी हम एक्टिविटी करते हैं और स्टैंडर्ड डेटा करते हैं. तो आज ये बाकी लोगों को मरीज करना पड़ेगा. जी, नहीं मैं तो डायरेक्टर बनूंगा. जी, who will become the doctor? It's 3 minutes activity. जी आ जाए. क्या नाम है आपका? Zunair. Okay, so we are having our doctor साहब, Dr. Zunair with us. आपके पास हूँ, मैं आपको हेल्प करूँगा. ये काफ़ी सारे लोग बीमार हो गए हैं, तो आप इन्हें मेडिसिन लिख के देंगी. ठीक है? कोई भी? हाँ. नहीं कोई भी नहीं, जो मसला होगा उसके अकॉर्डिंगली. ठीक है? अगर मसला गंभीर है तो पैनाडॉल लिख के देनी है, और अगर मसला सादा सा है तो ग्लिप्टिस्प्रिन, तो फिर ब्रूफेन. जी, डॉक्टर साहब रेडी हैं? तो यार आप बड़े जाए डॉक्टर साहब. जल्दी जल्दी आपने फिर पूछना है. आप मरीज हैं कि डॉक्टर? नहीं मरीज. क्या हुआ आपको? हेडेक है? अच्छा, आराम आराम से लिखें, पहले मसला भी सुने. सर दर्द.
क्या हुआ क्या हुआ? अच्छा पहले मुझे इसको तो फारिग कर दे। आप चले बैठे। अच्छा ये देना सर? जी जी बस ये नहीं देने प्रूफ एंड या आपको क्या हुआ? टांग में दर्द है। टांग में दर्द हो गया? मेडिकल गोली का। अब आपकी सही। अच्छा बस यहाँ पे रुके। लुक एट दिस थिंग। इसमें माशाल्लाह ये क्या है? We are doing something which is called data structure which is queue बोलते हैं। ठीक है? क्यू में क्या होता है? पेशेंट जो है, जो नए पेशेंट है वो उधर जाता है। ये और बात है कि जब ये अपना मसला बयान कर रहे हैं, ये भी सुनने की कोशिश कर रहे हैं, इसको क्या मसला है एनीवे, दैट इज अनदर थिंग, बट दिस इज क्यू। इससे पहले जो पेशेंट था उसने जब अपनी पर्ची दी, नहीं मेरा ईमेल इसमें तो निकालो, एनीवे क्यू में सबसे पहले जो आता है उसको हम खरीद सकते हैं और उसको ठीक है। पाकिस्तान में जो सबसे बुरा काम होता है वो क्यू को जब हम तोड़ने की कोशिश करते हैं, डॉक्टर साहब मैं ज्यादा बीमार हो गया हूँ। अच्छा तो क्या हुआ सर आपको? व्हाट इज क्रिएटिंग द प्रॉब्लम। तो दिस इज द क्यू डेटा स्ट्रक्चर जो कि डॉक्टर दुनिया साहब हैंडल कर रहे हैं। फ्यूचर में अगर ये डॉक्टर बन गए तो इंशाल्लाह दैट विल बी रियली गुड थिंग। सो दैट वाज डेटा स्ट्रक्चर। इसमें एक क्वेश्चन है, क्या ये कंट्रोल कर सकते हैं? अभी तो 4 मरीज हैं, अभी तबीयत खराब इसको नहीं मालूम। पिछले साल, ये रहा। लेकिन 4 हो गए, 4 से 5 भी हो सकते हैं, 5 से 6 भी हो सकते हैं, ठीक है। नाउ एरे के अंदर उसको रखना वो ज्यादती होगी, व्हाई बिकॉज़ पेशेंट साइज इज एवरी टाइम, ठीक है। तो अगर खुदा की बरकत हो तो 10 पेशेंट भी आ सकते हैं करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए इन दिस सिचुएशन जब डॉक्टर साहब चेक कर रहे हैं मरीजों को, थोड़ा सा स्माइल तो देंगे। अच्छा जब डॉक्टर साहब चेक कर रहे हैं तो क्यू इज द बेस्ट data structure that you can use, right? Okay, thank you so much for all the people who participated in this activity. Hopefully you will be feeling better. अच्छा एक चीज मैं आपको साइड नोट पे बताता चलूं कि वो कहते हैं आई डू आई अंडरस्टैंड, व्हेन यू डू समथिंग यू डोंट फॉरगेट मी। तो बजाय इसके कि आप 4 चीजें जल्दी जल्दी एक नजर देखें, इट्स बेटर टू प्रैक्टिस वन थिंग एट अ टाइम ताकि आप उसको फील कर सकें। ओके सो डेटा स्ट्रक्चर इज ऑल अबाउट डीलिंग विद क्यूज, ठीक है। उसके बाद फिर और क्या होता है, और मेरे गांव में आई एम रनिंग स्टोर, स्टेशनरी स्टोर। उसमें क्या होता है कि पेपर्स जिस तरह आपको यहाँ पे आंसर शीट फ्री में मिलती हैं, वहाँ पे फ्री में नहीं मिलती, हर बच्चा खुद से आंसर शीट अपनी लेके जाता है। ये हो गया, फिर ये हो गया। उसमें जब स्टेशनरी सेलर जो भी शीट्स आती हैं मैं क्या करता हूँ, उन्हें स्टैक में रखता हूँ, ठीक है। तो ये स्टैक हो गया, ये स्टैक हो गया, ठीक है। अब जो भी बायर आता है उसे जो भी ऊपर पड़े होंगे वो मैं दे देता हूँ, फिर ये आ गई, फिर ये आ गई, तो जो भी आएगा आई यूज द स्टैक। व्हाई? बिकॉज इट इज कन्वीनियंट टू यूज स्टैक ओवर हियर व्हेन आई एम देयर इन द बिजनेस ऑफ सेलिंग माय आंसर शीट्स। ओके सो जो डेटा स्ट्रक्चर्स apart from arrays and linked list, arrays आपने देखा होगा, arrays ऑफ नंबर जब भी होते हैं तो दैट इज आल्सो गुड थिंग। लिंक लिस्ट कब काम आती है? जब हमारे पास क्यूज या फिर स्टैक्स होते हैं। जी क्यू का एक और नाम भी होता है फर्स्ट इन
फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और इसका क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। फीफो लिफो आपने कौन से कोर्स में पढ़े? जी, अकाउंटिंग। Okay, so now linked lists are really powerful tool whenever we are dealing with queues. Okay. So what is data structure? So data structure is something which is array and linked list. And when we go deep inside, then it's all about queues and stacks. Okay? तो queue की एग्जांपल आपने यहाँ पे देखी, तो stack was what I was doing with my stationary item. Now, how do we organize information so that we can find, update, and each portion of it efficiently? आजकल के दौर में इंफॉर्मेशन को फैच करना दैट इज रियली चैलेंजिंग थिंग। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर इज सिस्टमैटिक वे टू ऑर्गेनाइज द डेटा इन ऑर्डर टू यूज इट एफिशिएंटली, राइट। तो जिस तरह रियल वर्ल्ड सिचुएशन में होता है, इस तरीके से यहाँ पर भी इसको एफिशिएंटली इस्तेमाल करना दैट इज क्वाइट इम्पोर्टेंट। इसके बाद the next thing is let's get the pictorial representation. यहाँ पर thanks to passionate teacher my friend Dr. Yasir Karim for sharing this poster and many other beneficial material on algorithms, about 20 books. तो हम ये जो जिनाम मैथ्स है ऑडिटोरियम में, वहाँ पे जब हम बैठते थे टू डिस्कस एल्गोरिथम, या वो वहाँ वाला जो एल्गोरिथम है, ठीक है, KNP algorithm for string matching, that is fantastic because of X by D reason and all that, so we enjoy that. But anyways, he shared this thing and many other things, so I'm thankful to him. Now, data structure. Whenever we are talking about data structure, there are various things which are there. So some of the most important data structures that we will encounter, those are called linear data structures. Okay. What are linear data structures? Arrays, जो कि आपने फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग में पढ़े होंगे। उसके बाद लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट क्या है? ये नोड्स हैं, इसमें कोई भी डेटा है वो अगले नोड का एड्रेस अपने पास रखता है, दैट इज लिंक्ड लिस्ट। इसकी काफी अच्छी डिस्क्रिप्शन बनाती है, इररेस्पेक्टिव कहाँ पे जा रहे हैं, देयर इज अ लिंक बिटवीन देम। स्टैक क्या होता है? व्हेन यू आर यूजिंग दिस पर्टिकुलर स्टैक, तो आपके पास स्टब्स आ रहे हैं या ट्रेस आ रहे हैं, आपको एक दूसरे के ऊपर रखते जा रहे हैं, जैसे ही आपको जरूरत पड़ती है आप ऊपर वाले निकाल के दे देते हैं। एंड क्यू, तो ये सारे के सारे डॉक्टर साहब के पास गए हुए हैं, डॉक्टर साहब दवाइयाँ बहुत ज़्यादा देते थे, मैंने पूरी पूरी क्या खाई हुई है, बास्केट खाई हुई है, ताकि दवाइयाँ लेके। ठीक है, ओके, एनी क्वेश्चन स्टिल हियर? इन्हें लीनियर क्यों कहते हैं? गुड क्वेश्चन जी। एनी कमेंट्स फ्रॉम द क्लास? व्हाई वी कॉल इट लीनियर जी? अच्छा, ये लीनियर क्यों कहते हैं? इन्हें लीनियर इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर एक ऑर्डर है, और वो ऑर्डर जो होता है वो एक ही लाइन को मेंटेन रखते हैं। इसमें अगर आप array के अंदर देखें तो there is line, there is somewhat line, stack there is somewhat line, queue there is line। ठीक है, बाद में हम
जब आगे जाएंगे तो हम एक स्ट्रक्चर पाएंगे विच इज कॉल्ड ट्री। तो ट्री जो होता है दैट इज नॉट अ लीनियर स्ट्रक्चर, दैट वी विल स्टडी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यू में और रे में फर्क क्या होता है? ठीक है, ओके, क्यू में और रे में क्या फर्क होता है? तो बेसिकली रे के अंदर क्या है कि आपने इनको एग्जैक्ट पोजीशन पे खड़ा कर दिया एंड दे आर नॉट, आपने कहा बस ये आपकी जगह है, यहाँ से आपने नहीं हिलना। जब दोबारा आऊंगा आप पहली पोजीशन पे, आप दूसरी पोजीशन पे, आप तीसरी पोजीशन पे आओगे, दैट्स इट, नो मूवमेंट एट ऑल। जबकि क्यू में आपने देखा था डॉक्टर साहब चेक करते जा रहे थे, पेशेंट निकलते जा रहे थे, पीछे की ओर पेशेंट आ रहे थे, दैट वाज द सिचुएशन। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है, तो मैं का क्वेश्चन जी बेटा आप बता दें, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैक एंड क्यू? सबसे पहले निकल जी, क्योंकि सबसे तो आप दोबारा बोलिए। सबसे पहले सबसे एंड में, बिल्कुल ठीक है। स्टैक में जो चीज सबसे पहले डाली, ये हेड का है, ये सबसे एंड में, ठीक हो गया? बिल्कुल ठीक है। क्यू में जो चीज सबसे पहले जाएगी वो सबसे पहले एग्जिट होगी, तो दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस। ओके गुड, लेट्स मूव ऑन। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, because this is the very first class, there are two options and I always love कि आप लोगों का टाइम बचाया जाए तो कम टाइम हो। So there are two options. One option one is जिस तरीके से 9 बजे मुलाकात हुई, 9:50 तक, फिर आपको एक छोटी सी ब्रेक दी जाए 10 बजे, फिर 10:50 पे आप फारिग हो, उसके बाद जहाँ पे भी आपने जाना है आप भाग के जाएं। दैट इज ऑप्शन वन। ऑप्शन टू, क्योंकि ये पहली क्लास होती है, आपके अंदर एनर्जी मौजूद होती है, तो आई से कि 9 से लेकर 10:30 तक। ठीक है, इसमें क्या होता है, 10:30 इज ऑलमोस्ट सेम। क्यों? पढ़ाई के लिए, क्योंकि जब यहाँ पे आप जाते हैं ना 10 मिनट के लिए, फिर आपको आते आते भी टाइम लग जाता है, सेटल डाउन होने में टाइम लग जाता है, तो आपका टाइम वेस्ट होता है। उसके बाद ये जो 10 मिनट का स्लॉट है, इसमें आपको ज़्यादा एक्टिविटी कर भी नहीं सकती। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, 9 से लेकर 10:30 तक सिर्फ एक मरतबा अटेंडेंस होगी। ठीक है, और बाकी जो टाइम होगा वो सारा डिस्कशन उसी लेवल होगा। तो फिर आपके पास जो 30 मिनट का स्लॉट होगा, आप चाहे इधर रहें, चाहे सीट चले जाएं, चाहे कोरियर चले जाएं। ठीक है, ओके, सो हाउ मेनी पीपल विल गो फॉर ऑप्शन वन? हाउ मेनी पीपल विल गो फॉर ऑप्शन टू? वन विद यू, अगर से पंखा नहीं है मेरा हाल बुरा हो रहा है सकता। एनीवेज नहीं कह देंगे, एक पानी की बोतल मंगवा मुझे लाइफ का से होता है, मैं सर पानी नहीं। ओके, अच्छा पहले पानी की बोतल मंगवाइए, पंखा नहीं है तो बढ़िया भी है, तो बोल निकाल जी। गुड क्वेश्चन, या इससे थोड़ा सा आप बताएंगे तो से शायद ऐसा होता है। So, what's your good name? Abbas. Okay, clapping for Abbas, mashallah. He is very caring and intelligent. Okay,
Let us see our already phone Okay, so why to perform data fetching? So end of question हमेशा clear करें why we are doing it. ठीक है, अगर हम ये लीव करके सुबह सवेरे 9 बजे आ जाते हैं आप भी और मैं भी, what is the reason why we are doing it as a business? ठीक है, अटेंडेंस के बारे में इतना ज़्यादा टेंशन ना लिया करें. आपको अगर पहले 50 मिनट में आ गए तो पहले सेक्शन की मार्क हो जाएगी और अगर 10:30 से पहले आ गए तो आप सेकंड की मार्क हो जाएगी. ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सीखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. तो how does Pretty find web pages that contain a search term? ठीक है, so read all the 4 and choose which one you like the best. Read all the 4. It's correct. ओके जी, आप इन 4 में से ज़्यादा अच्छा करें. अभी आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगी. थर्ड वाला, ओके, थर्ड वाला व्हाई काउंटर स्ट्राइक. हाउ कैन कंप्यूटर डिटरमिन व्हिच पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग्स आर विजिबल. ठीक है, बेसिकली आप काउंटर स्ट्राइक खेल रहे हैं या डिफेंस ऑफ एशियन डोटा खेल रहे हैं. उसमें क्या है कि कंप्यूटर को पता होना चाहिए कि कौन से पार्ट बीइंग, आई मीन जब आप यहाँ पे मौजूद है तो आप कौन कौन से पार्ट विजिबल है ऑल दैट. इट विल ह्यूज अमाउंट ऑफ मैथमेटिक्स इन्वॉल्व. ठीक है, तो इफ वी आर मेकिंग सच टाइप ऑफ गेम एंड वी आर यूजिंग अनरियल गेम इंजन, उसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा टूल्स मौजूद होते हैं. तो आपने रियल टाइम में जो आपका प्लेयर है उसको पॉइंट आउट करना होता है कि हाँ यहाँ पे मौजूद है. वो जो डेटा होता है हैज कम सीरियसली, ताकि आपको रियल टाइम में ग्राफिक्स नजर आए, वो फील लाइक रिजल्ट. उसके बाद हाउ मेनी सिटीज मोर देन 2500 पीपल लाइव विद 500 किलोमीटर ऑफ टाउन. ठीक है, इसकी संख्या डेटा की जरूरत पड़ सकता है. तो लास्ट वाला क्यों जरूरत पड़ेगा? एनीवन लास्ट वाला हाउ मेनी सिटीज with more than 2,500 people live within 500 किलोमीटर ऑफ टाउन. ये डेटा में क्यों जरूरत पड़ेगा? इसकी 10 वजूहात हो सकती हैं, कोई एक वजह बता दो. इस बात में हम उस हिसाब से प्लानिंग कर सकते हैं कि हम एक सिटी में कितने लोग हैं. अगर कोई कंडीशन आती है तो उस हिसाब से बिल्कुल ठीक है. कोई हंगामी सिचुएशन हो जाती है तो एक जो चीज है पूरी दुनिया में इशू, दैट इज कॉल्ड अर्बनाइजेशन. अर्बनाइजेशन में क्या होता है कि आसपास के देहात के जो लोग हैं वो मेजर सिटीज के अंदर आना शुरू हो जाते हैं. इसकी वजह यह है कि आई बिलोंग टू अ सिटी व्हिच इज कॉल्ड ये खान. ओके, वहाँ मोस्टली बिजली नहीं होती. ठीक है, पीने का साफ पानी मुहैया नहीं है. डॉक्टर्स जब आप हॉस्पिटल में जाएं, अगर नज़ला जुकाम है तो आपको ऑन स्पॉट ब्रोफेन या पैराडॉल डॉक्टर साहब भी दे देते.
However, इसके अलावा कोई भी मसला है तो आप ये इस्लामाबाद भेजेंगे या लाहौर, ठीक है। तो दैट इज द प्रॉब्लम। इसकी वजह से क्या होता है, अर्बनाइजेशन होती है, अर्बनाइजेशन इज द बिग इशू। अगर कल कलाम कोई मेजर इशू होता है तो लोग क्या होंगे, इस्लामाबाद के आसपास के शहरों के दे विल रन टुवर्ड इस्लामाबाद। तो इस्लामाबाद की जो फैसिलिटीज हैं, जैसे हॉस्पिटल क्या है, सीएमएच है, एमएच हॉस्पिटल है, शिफा इंटरनेशनल है, किम्स है, ओवरफ्लो हो जाए। You have to go for the planning for the country to take care of disaster. Here I am discussing the data in the first place. Now, why to perform data structuring? Can we connect all the telephone customers with less than 1,000 kilometers of people? ठीक है, अगर लैंडलाइन की बात हो रही है, ठीक है, तो we have to do this thing. To answer questions like these 5%, it is not enough to have the necessary information. You must archive information in a way that allows us to find answers in time to satisfy our needs. ये हमारे लिए बहुत जरूरी होता है कि हम इस तरीके से अरेंज करें कि हमें जब जरूरत पड़े तो वो इंफॉर्मेशन हमें फौरी तौर पे अवेलेबल हो, ठीक है। Now, what is data structuring anyway? अब ये चार चीजें आप ध्यान में रखें, रेट, लिंक लिस्ट, उसके बाद स्टैक्स एंड क्यू। तो ये हमारे पास चार डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जो कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो व्हाई डेटा स्ट्रक्चर anyway? Agreement about how to store collection of objects in memory. Array में किया तो वहाँ पे fixed size हो गई, you can't change it. What operation we can perform on data? तो अब क्या डॉक्टर साहब को चेक कराना है तो क्यों, ठीक है। अगर वो आइटम उठा के एक कस्टमर को देने हैं जो कि होमोजीनियस हैं, then क्या है? एल्गोरिथम का दो ऑपरेशन, कौन से एल्गोरिथम के इस्तेमाल होंगे? अब डिपेंड करता है, जब आप क्यू को ट्रीट कर रहे होते हैं आपको डिफरेंट एल्गोरिथम जरूरत पड़ता है, जब आप स्टैक को हैंडल करते हैं आपको डिफरेंट एल्गोरिथम जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो हाउ टाइम एंड स्पेस एफिशिएंट these algorithms are. अब दो चीजें जो कि आपने ध्यान में रखनी है कि whenever people are working with such type of things, what they are doing, मैंने ड्राइवर्स बनाने की कोशिश की है। Anyways, so there are two things whenever we are talking about any algorithm. One is time complexity. Algorithm कितना टाइम ले रहा है, and the other one is called space complexity. तो कमिंग ईयर में एक पूरा कोर्स होता है which is called design and analysis of algorithm, ठीक है, वो भी मैं पढ़ाता हूँ। इसमें भी go and enter into the detail of time complexity of algorithm and space complexity of algorithm and how we can design new algorithm with better time complexity, better space complexity, okay. So now डेटा स्ट्रक्चर, अगर आप ऐप डेवलपमेंट कर रहे हैं तो फिर फर्स्ट क्वेश्चन इज कौन से एल्गोरिथम इस्तेमाल करें, कौन से डेटा स्ट्रक्चर इस्तेमाल करें। व्हाई? बिकॉज अगर आपने ऑर्गेनाइजर दे दिया तो ऑनलाइन ऑर्गेनाइजर है, आपको जो यूजर है वो अपने मोबाइल पे भी एक्सेस कर सकता है, अपने आईफोन पे भी एक्सेस कर सकता है, आईफोन 15 उसकी तस्वीर डालने की नहीं डाल सकता। अच्छा, तो आईफोन 3 से भी एक्सेस कर सकते हैं और लैपटॉप से भी एक्सेस कर सकते हैं। नाउ whenever we are saying कि buy vegetable
then drop it to Milan, clean bathroom. Milan में उसको आपने भेज दिया, बेटे केक एक्सेट्रा योगा. Now इसके लिए सबसे पहले कुछ पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर आपने इस्तेमाल करना है. तो इसमें क्या है, आप डिलीट भी कर सकते हैं, आप कुछ एडिट करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं, तो आपको एक्सेस भी इजीली होनी चाहिए. तो जस्ट आउट ऑफ दीज 4, अगर आपने ये वाला ऑर्गेनाइजर implement करना है, each data structure you will choose. Just write the name. Just write one name out of these 4 data structures. Will you array, or will you linked list, or will you queue, or will you cache? तो ये आप ध्यान में रखें कि आपके 1 मिलियन यूजर हैं और 1 मिलियन यूजर हमारे इकट्ठे ही आपकी ऐप को एक्सेस कर रहे हैं. कोई उसके अंदर ऐड कर रहा है, कोई उसके अंदर डिलीट कर रहा है. जी हरियर एक वर्ड है. आप मशवरा भी कर सकते हैं लेफ्ट राइट से. ठीक है, अच्छा इसमें मैं क्या करता हूँ, मैं एक नया प्रोग्रामर हूँ. ठीक है, मैं क्या करूँगा, सबसे आसान डेटा स्ट्रक्चर ना एरे वाला होता है. चलो एरे इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, तो मैंने एरे पकड़ा, इसके बैक एंड पे मैंने एरे कर दिए. तो जी who will tell me what are the disadvantages of my choice? Why I have choosing bad data structure? आपका नाम? कहाँ? जी कहाँ? इंसर्शन और डिलीशन पे मसला होगा. जैसे ही आप दरमियान से एक वैल्यू को डिलीट करेंगे मसला होगा, दरमियान में आप एक नई वैल्यू सेलेक्ट करना चाहेंगे आपको मसला होगा. सारा जितना भी ऑर्गेनाइजर दो जगह पे बनाना पड़ेगा. दैट इज द बिग प्रॉब्लम. जी इस प्रॉब्लम के अलावा कोई और प्रॉब्लम आपके ध्यान में आ रहा है? साइज अगर ओवरफ्लो हो जाए, ठीक है, क्योंकि एरे में आपने फिक्स साइज कर दी है 100 आइटम. जैसे ही 101 आइटम हुए तो ओवरफ्लो हो जाएगा. फिर आपको सारे आइटम कॉपी करके किसी और जगह पे करने होंगे. नोटिस दैट आपकी ये जो ऐप है ऑर्गेनाइजर ऐप, ये सिर्फ आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, बल्कि इमेजिन करें कि 1 मिलियन यूजर्स इसको इस्तेमाल कर रहे हैं. ठीक है, 1 मिलियन यूजर्स के लिए जब आप सारी को इरेज करके दो जगह पे राइट करने की कोशिश करेंगे तो इस किस्म के 1000 ऑपरेशन जब साइमल्टेनियसली रन हुए तो बस आपका सर्वर बैठ जाएगा. ठीक है, आपका सर्वर बैठ जाएगा, आपकी जो सर्विस होगी वो एक्सेसिबल नहीं होगी लोगों को. लोग आपकी जो ऐप है उसको डिलीट करके किसी और ऐप पे स्विच कर देंगे. ठीक है, तो बेसिकली आपने क्या किया था, एक रॉन्ग डेटा स्ट्रक्चर चूज किया था जिसकी वजह से आपकी ऐप बैठ गई. फिर आप ये पूरा डेटा स्ट्रक्चर चूज करने वाला बाद में क्या कहते हैं, the bags requirement always according to the rules. ठीक है, तो एक ऐसा मैकेनिक जो कि बुरा मैकेनिक है वो हमेशा टूल्स के साथ ही लड़ता रहता है. क्या ये फिक्स ठीक नहीं, इस वजह से
I can't say it properly. So anyway, क्योंकि फिर क्या होता है, फिर अमूमन सॉफ्टवेयर हाउसेस में ना लोग इस पे लड़ रहे होते हैं, और मैंने तो कहा था ये जो 16 GB वाला रैम सर्वर है ये काम नहीं करेगा, लेकिन इस बात से छूटता ही नहीं है। 64 GB वाला होता तो फिर देख लेता। ठीक है, इट्स नॉट मोर अबाउट द रिसोर्सेज, बट इट्स ऑल अबाउट द थिंग्स, किस तरीके से आपने चीजों को रखना होता है। ठीक है, तो जस्ट रीड these points. Okay. Now, अब बात आती है एल्गोरिथम की। ठीक है, so you have to make always good choice, और इसमें linked list is the better choice। ठीक है, कि आप जो भी नया आइटम आ रहा है उस आइटम को इंट्रोड्यूस करा के मेमोरी लोकेशन। So now algorithm how to access data for a result, scan data sequentially, scan according to the sequence of structure, scan data with formula. So this is what we have to do. Algorithm how to provide a smart solution. तो हर एल्गोरिथम जो होता है उसके पीछे एक आइडिया होता है। ठीक है, तो कुछ एल्गोरिथम हम पढ़ेंगे, इसमें फॉर एग्जांपल डाइस्ट्रा एल्गोरिथम या क्लीन एल्गोरिथम है जो कि हम इस कोर्स में पढ़ रहे होंगे। Then we shall see what is the beauty of this algorithm work for data. Now, why data structuring is necessary? तो डेटा स्ट्रक्चर तो हो गए, ठीक है, लेकिन हम क्या कर रहे होते हैं, केवल डेटा स्ट्रक्चर एज इट इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं, उसके बाद हम क्या कर रहे होते हैं, मजीद इसको चेंज करके भी, मॉडिफाई करके भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक, नाउ डेटा सर्च फॉर एग्जांपल एन इन्वेंटरी ऑफ 1 मिलियन आइटम ऑफ अ स्टोर। ठीक है, तो 1 मिलियन से नीचे आपने रहना भी नहीं है। 1 मिलियन यूजर्स, 1 मिलियन आइटम्स ऑफ अ स्टोर। तो अगर आपने 1 मिलियन आइटम्स रख लिए स्टोर के अंदर, जब जरूरत पड़ी कि फलां आइटम, इमेजिन करें आप डॉक्टर साहब एक मेडिकल स्टोर चला रहे हैं, आजकल बच्चे काफी सारे डॉक्टर अपना मेडिकल स्टोर भी चला रहे हैं। तो अच्छा, इमेजिन द सिचुएशन कि जो भी दवाई आ रही है आप उसको खा के मेडिकल स्टोर के अंदर फेंक दी जा रही है, पैरासिटामोल और पेंसिल, ब्रूफेन। अब पेशेंट आ गया, उसने 32 दवाइयाँ लिखी हुई है, डॉक्टर साहब ने सारी लिख दी है, ये सारी 32 खाओगे तो बच रहे कितना हम समझ में डॉक्टर साहब की रिकमेंडेशन है 20% होते हैं ना डॉक्टर। अच्छा, तो अब 32 दवाइयाँ आपने स्टोर से निकाल के देनी है, हाउ विल यू डू दैट? क्योंकि जब भी दवाइयाँ आ रही हैं हमने बस फेंक दी, who is that? सारी चेक करें। ठीक है, पहली दवाई पकड़ के अब आपको सारी दवाइयाँ चेक करनी, ये तो नहीं है, दैट वुड बी बिग मैस। क्यों? क्योंकि स्टोर के अंदर 1 मिलियन आइटम्स पड़े हुए हैं, तो आपने 1 मिलियन में से 32 को करनी है। हो सकता है पहला आइटम जब आप चेक करें तो पहला आइटम जो है वो आपको 5 लाख आइटम सर्च करने के बाद मिलेगा। दैट वुड बी अ chaotic सिचुएशन।
आपका जो सिस्टम होगा वो टोटली फेल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, चीज़ों को रेंज करके रखते हैं सम ऑर्डर। देन प्रोसेसर स्पीड, processing speed although being very high was limited with data growth to billion records। लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, सॉर्टिंग वगैरह इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि 1 बिलियन रिकॉर्ड जो होते हैं दैट इज नथिंग बट व्हाट 2 रेज़ पावर ओके 1 बिलियन is less than 2 raised power 20। तो 20 सर्च ऑपरेशन से पहले ही आपको मिल जाएंगे अगर आपने इनको सॉर्टेड रखा होगा। नाउ multiple requests, 1,000 of users can search data simultaneously on a web server, even fast server space when searching for the data। जी, पाकिस्तान में कब होता है जब हजारों की तादाद में यूजर्स एक ही वेबसाइट पे जाके डेटा सर्च कर रहे हैं। ऐसा ही जब आता है मैट्रिक का रिजल्ट आता है या फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आता है तो सारे यूजर्स एक अपना रिजल्ट चेक कर रहे होते हैं। इसके अलावा अपना रिजल्ट चेक करने के अलावा अपने दोस्तों, ठीक है, जो भी कंपटीशन में होते हैं आप उनका भी चेक करते हैं और सिर्फ उन दोस्तों को सर्कल करने की कोशिश करते हैं जिन्होंने आपसे कम मार्क दिए, ताकि आप अपने वालिदैन को बता दें वो आप बड़ा मेहनत करते हैं, लेकिन इसके मार्क्स कम मेरे उससे ज़्यादा। तो उसकी वजह से there are thousands of queries which are running over there। ठीक है, उन्होंने भी फिर आपको ये लिखा होता है कि आप अपना रोल नंबर भी एंटर करें, साथ में अपनी डेट ऑफ बर्थ भी डालें, साथ में सीएनआईसी भी डालें और साथ में कैप्चर भी दें, वो करें फिर आप दैट इज जस्ट टू स्लो डाउन नंबर ऑफ यूजर्स। ओके, 1000 of users can search data, if we simultaneously search the data, that becomes a real challenge। Any question till here? तो मेरा क्वेश्चन ये है, चाहे 10 बंदे सर्च करें चाहे 1000 सर्च करें, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बिल्कुल, एक्चुअली पैरेलल जब 10 कामों में आप लगाएंगे तो आपकी कंप्यूटेशनल पावर 10 पे डिवाइड हो जाएगी। अगर 1000 है तो आपकी जो कंप्यूटेशनल पावर है आप क्या होगी, 1000 थ्रेड करेंगे और हर थ्रेड को आप कैटर कर देंगे, तो दैट इज 1000 थ्रेड्स की प्रोसेसिंग, दैट इज द रियल चैलेंज। ठीक है, तो अब इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो क्या है, रेजन, रिप्लेस, ये हमने देख लिया। इसमें रेज के अपने फायदे हैं, रिप्लेस के अपने फायदे हैं। ओके, नाउ गो टुवर्ड्स एन एनालॉजी। ठीक है, बॉयज में से मोटरसाइकिल पूरा सर्च चला लेते हैं। ओके, तो ये बताएं सबसे अच्छा मोटरसाइकिल कौन सा है? ठीक है, एक नाम आ गया CD70, एक नाम आ गया वेस्पा, इसके बाद हायाबुसा,
हाँ easy byte ठीक है। अच्छा लेट्स फाइल पुराने जमाने की है लुकी भाई अब इतने पैसे ही नहीं है अब दो आइटम आ गए 370 ठीक है। तो नाउ एवरीथिंग हैज इट्स प्रोज एंड कॉन्स जी। अगर आप सेल कर रहे हैं कि बाइक इसके प्रोज बताएं जी। इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं बिल्कुल ठीक हो गया। इसके अलावा इसके और फायदे क्या हैं इलेक्ट्रिक क्या है ठीक है। तो इसके अंदर कोई आपको फोन वगैरह नहीं चलवाना पड़ता चार्ज करें मोबाइल फोन भी कर रहा होगा जी। कार्बन इमिशन यहाँ पे नहीं है यहाँ पे दूसरी कंट्री पे वहाँ पे होते हैं लेकिन स्टिल लेसर कार्बन इमिशन की लगेगी। इसके अलावा लाइट वेट बिल्कुल ठीक है। तो ये लाइट वेट है इट इज इजी टू हैंडल एज कंपेयर टू CD70 ठीक है। इसके कॉन्स भी है ठीक है। स्पीड लिमिट ठीक है। आपके पीछे ट्रक आ गया है ट्रक 80 की स्पीड पे और आप 25 पे ठीक। हाँ हर जगह पे आप इसको नहीं ले जा सकते। अगर आपने यहाँ से G11 जाना है आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आपने इजी बाइक लेके नहीं जाना आप भले से CD70 ले जाएं जी। इस पे डबल सवारी अलाउड नहीं है ऑफिशियली जी। तो इसलिए आपने देखा कि इसके प्रोज भी हैं इसके कॉन्स भी हैं। सिमिलरली CD70 के भी प्रोज भी हैं कॉन्स भी हैं राइट। When we are talking about such a data structure arrays, इसके प्रोज में बहुत मेमोरी एफिशिएंट है आप डेटा टाइप के हैं। इसके कौन क्या है जी के आप बता दें क्या नाम है आपका नाम वाई कौन बता दें इसको मोबाइल पे नाम बता दें जी। कौन बता दें लिंक लिस्ट कितना कौन है जी। गुड आइडिया। लिंक लिस्ट का कौन ये है कि मेमोरी जब आप स्टोर कर रहे होते हैं उस वक्त ज्यादा लगे क्योंकि हर डेटा की जो मेमोरी लोकेशन है वो आपको सेव करना है एट एवरी जोन ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर अरेज इस्तेमाल करते हैं लिंक लिस्ट इस्तेमाल करते हैं फिर स्टैक जिस तरीके से कप्स का स्टैक था और क्यू यहाँ पर पेशेंट्स का एक पूरा क्यू था और ट्रीज these are the non-linear structures क्योंकि बाद में सर्च ऑपरेशन गूगल सर्च इस किस्म के जो सर्च ऑपरेशन होते हैं वहाँ भी काफी ज़्यादा यूजफुल होते हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या इंशाल्लाह। इसमें कुछ प्रिंसिपल्स हैं ऑर्गेनाइज करने के। एक जो चीज़ है दैट इज ऑर्डरिंग। ऑर्डरिंग में क्या होता है वी पुट keys into some order so that we know something about each keys relative to other key. Phone books are easier to search because they are alphabetized ठीक है। तो आप अगर आप किसी भी फ़ोन बुक को देखें जहाँ पे डायरेक्टरी मौजूद है तो दैट इज़ क्वाइट इजी टू एक्सेस वाई बिकॉज ऑल द नेम्स आर रिटन इन ऑर्डर। उसके बाद लिंकिंग इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट थिंग। Add pointers to each of the records so that we can find related records quickly ठीक है। तो for example index of the back of the book provide links from words to the pages on which they appear। तो अगर आप कोई कन्वेंशनल बुक उठा लें तो आपको उसके एंड पे लिंक्स मिलेंगे and if you are interested in finding a word which is honor killing तो आप क्या करेंगे ऑनर सर्च करेंगे और वो आपको कहेगा कि ऑनर इज अपेयरिंग एट पेज नंबर 34 कामा 349 तो वो दो पेजेस हैं यहाँ पे प्रोमिनेंटली वो वर्ड अपीयर हुए हैं। दोज आर बेसिकली पॉइंटर्स
उसके बाद partitioning, divide the record into 2 or more groups, each group sharing a particular memory. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप क्या कर देते हैं, जब जो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका इफ आई एम नॉट रॉन्ग उसकी 24 वॉल्यूम्स है, 24 के आसपास वॉल्यूम्स है, और हर वॉल्यूम में पहले में सिर्फ ए से रिलेटेड है, दूसरे में बी है। तो दिस वे दे आर ऑर्डर्ड। तो आपने कोई भी इंफॉर्मेशन वो करनी हो तो वॉल्यूम्स के अंदर आपने पार्टीशन कर दिया, दैट बिकम्स क्वाइट इजी टू फाइंड द थिंग आउट। अब अगर ऑर्डरिंग नहीं है तो एक ही चीज मैं आपको वैसे मशवरा दूंगा, तो ये है कि हमेशा लोग सोल्यूशन की तरफ भागते हैं, ये चीज बड़ी अच्छी है, लेकिन इमेजिन करें अगर वो चीज ना होती तो फिर क्या मसाइल होगा। ठीक है, ऑर्डरिंग तो आपको अच्छी है, ठीक है, लेकिन ये आपको एक लिस्ट दी गई है। ठीक है, इस लिस्ट के अंदर आपको कहते हैं कि एक एनिमल है, उसका नाम है टर्की, तो वो फाइंड करें एनिमल टर्की, 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 या गॉट इट। ठीक है, नेक्स्ट क्विज आपको आता है कि आपने रॉबिन करने हैं, कितनी देर बाद जब भूख है तो ग्रैब और वर्ड दिस, तो आपकी पूरी जो n आइटम्स की लिस्ट होगी, 1 मिलियन आइटम्स में 1 मिलियन पूरे पूरे सर्च करेंगे, देन यू विल एंड अप एट फाइंडिंग। हाउएवर अगर आप इसको सॉर्ट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू अल्फाबेट्स, फिर क्या होता है, यू कैन ऑलवेज सर्च फॉर समथिंग कॉल्ड बाइनरी सर्च। आप क्या करते हैं, डिक्शनरी को खोलते हैं, फॉर एग्जांपल डिक्शनरी को जैसे ही खोलते हैं, अगर आप मिडिल में खोलें तो एम लेटर होगा, तो अगर आपने हॉर्स तलाश करना है तो आपने डिक्शनरी को दरमियान से खोल लिया। आपने से किसके पास कोई नोटिस बुक है क्या है बरोबर। ओके, तो हॉर्स तलाश करना है, जब मिडिल से ओपन करेंगे बट आई गेट एम, तो ये वाला लेफ्ट वाला पोर्शन यहाँ पे हॉर्स हो गया या राइट पे? लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट पे अब फिर इसके दरमियान में हो सकता हूँ, एंड नाउ आई कम टू जी। ठीक है, तो जी पे आएगा तो अब इसमें क्या होगा, ठीक है, अब हमें राइट पे जाना होगा। इस तरीके से यू कैन गो ऑन बैक। ओके, तो इसलिए आपको पता होता है कि यहाँ से लेफ्ट जाना है, राइट जाना है। व्हेन यू नो दिस थिंग, तो आपको क्या होता है, लॉग ऑफ एन ऑपरेशन की जरूरत होती है। तो 1 मिलियन एंट्रीज अगर आपके पास है, 1 मिलियन के लिए आपको विद 10 ऑपरेशन यू कैन फाइंड दोस थिंग्स। फिर लिंकिंग, ये हम देखेंगे किस तरीके से आप नोड्स बनाते हैं और हर एक का डेटा होता है, डेटा के साथ नेक्स्ट आप क्या करते हैं, कंकेटिनेट कर देते हैं उसकी मेमोरी लोकेशन को। उसके बाद पार्टीशनिंग, ठीक है, ये हम डिटेल से देखेंगे किस तरीके से हम ट्रीज के अंदर पार्टीशन करते हैं। तो कोर्स कंटेंट्स जो हैं वो हमारे मुख्तलिफ चीज़ें होंगी। एक जो चीज़ होगी वो इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम होगी। तो जिस तरीके से आज हमने थोड़ा सा देखा रेल, लिंक लिस्ट, क्यू और स्टैक्स, तो फ्यूचर की जो लैब्स होंगी उसमें हम लिंक लिस्ट, क्यू, स्टैक इनको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप भी उसको खुद से करके देखें। जब तक आप उससे प्ले नहीं करेंगे यू विल नॉट
get the deeper understanding of that. उसके बाद सॉर्टिंग, सर्चिंग और रिकर्शन ऑपरेशंस में जो एल्गोरिथम इस्तेमाल होते हैं उनको हम देखेंगे। इसके बाद ट्रीज, ग्राफ्स, ये इंशाल्लाह हमने देखना है कोर्स कंटेंट्स में। उसके बाद काफ़ी सारे डेटा स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, बैलेंस ट्रीज, एरेज ट्रीज, लिंक लिस्ट, तो ये सारी की सारी चीज़ें हमने इंशाल्लाह इस कोर्स के अंदर करनी है, ठीक है। फिर एक और जो चीज़ आती है कि किस पर्टिकुलर सिचुएशन में कौन सा एल्गोरिथम ज़्यादा एफिशिएंट है, उसको इस तरीके से हम ऑर्डर कर देते हैं कि इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी लीनियर है, इसकी लॉगरिथमिक है, इसकी एक्सपोनेंशियल है, एंड देन वी यूज अकॉर्डिंगली। So summary of today's lecture is much of programming and thinking about programming involved deciding how to arrange information in arrays. Choice of data structure can make a big speed difference. उसके बाद sequential search versus binary search means order of n. जिस तरह गूस की सर्च में हम मैसेज जा रहे थे तो n आइटम्स 1 मिलियन आइटम्स को करना था, लेकिन log of n अगर सॉर्टेड लिस्ट हो तो 10 सर्चेज में आप 1 मिलियन का डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फिर डेटा स्ट्रक्चर की जो प्रिंसिपल्स होते हैं, ऑर्डरिंग होती है, लिंकिंग होती है और पार्टीशनिंग होती हैं, ये हम इंशाल्लाह देखेंगे। तो ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, ये कोर्स आउटलाइन में अपडेट कर दूंगा। असाइनमेंट्स की कम होती है, क्विजेज आर वेरी इंपॉर्टेंट और क्विजेज आर अनअनाउंस्ड, किसी भी वक्त हो सकता है, अगली क्लास में भी हो सकता है डेटा स्ट्रक्चर। अच्छा, अगली क्लास में नहीं, इससे जो कमिंग वीक होगा उसमें हो सकता है, तो दैट विल बी टू अर्ली क्योंकि एलएमएस एक्टिवेट नहीं हुआ। तो ये थ्योरी के मार्क्स। फिर क्विज में मैंने एक और रखा हुआ है कि जो क्विज आनी ना होते हैं उसमें क्या होता है, दिस क्विज विल नॉट बी टेकन, डोंट ईमेल टेक अ क्विज, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी एग्री। लेकिन क्या किया है, bonus, any student with attendance at least 80% will get bonus by replacement of minimum quiz score by maximum. तो एक स्टूडेंट है जो हर क्लास में आता रहा है, एक दिन उसकी दादी बीमार हो गई और वो स्टूडेंट नहीं आ पाया, उसी दिन क्विज हो गया क्योंकि उसकी अटेंडेंस ऐसे वो बड़ा पंक्चुअल था, उसको मुझे मिनिमम स्कोर होगा 0, that would be replaced by the highest score, which is 9, ठीक है। तो एक का हो जाएगा, उससे ज़्यादा का नहीं, इफ़ यू अटेंडेंस इज दिस। उसके बाद असाइनमेंट लिखा हुआ है, ओके। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन